Hello everyone, welcome back again to my official YouTube channel Summits and Classes. In the last season, we have understood about the methods of solving the linear equations in two variables. Okay, so we have discussed a lot of things related to the same topic, and we also have solved the exercise 3.2 in the last sessions. Now in this class, we are going to understand about how to solve the questions of exercise 3.3. Okay, so before solving these questions, I just wanted to tell you again the substitution method about which we have discussed in the last session. Okay, so in this class we are going to solve these whole questions by substitution method. But before solving these questions, I would like to tell you about the substitution method again. Okay, so substitution method is what? This is the method in which the value of one variable is taken out from one of the equation. That means that equation can be either equation 1 or that equation can be either equation 2. Okay, so substitution method is the method in that the value of one variable from one equation is taken out and it is put it or it is substituted in the second equation. Okay, that means if you are taking it from first equation, then you have to put it in equation second. Okay, and if you are taking the value of one of the variable from second equation, then you have to put it in first equation. Okay, by putting the variables, one variable's value in a equation, generally this be the linear equation in one variable, and linear equation in one variables are solved easily in our later classes. No, that means in class 6, 7, 8 you have discussed or you have understood how to solve the linear equation in one variables. Okay, so you have to take one of the value from one of the equation and put it in the other equation. Okay, and that is the value of a variable. So let us start how to solve exercise 3.2 by substitution method. We don't have to apply any other method. About that we have studied in last classes. We have to apply only what? Substitution method. Okay, so let us see how the questions of this exercise are going to be solved. Okay, if we just talk about the very first question, that is question number 1 first. No, then we will have to write what it is given: x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. These are the two equations. Okay, so this is the equation first and this is equation second. You understand that we have to take out the value of one of the variable, and that variable might be x or y. Okay, so we can write here again from equation 1, from equation first, you have what? X plus y is equal to 14. This is already what you have from equation 1, and we are going to find out the value of one of the variable. So x की value को हम लोग find out कर लेते हैं पहले. Then we will write x is equal to 14 minus y. ओके, और ये हमने कहाँ से लिया है? इक्वेशन फर्स्ट से लिया है, तो इसको हमको कहाँ रख देना है? इक्वेशन सेकंड में रख देना है. तो क्या लिखोगे यहाँ? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. हम लोग कहाँ रखेंगे इसको? इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे. ओके, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, वी विल हैव टू राइट on the place of this x, we have to write 14 minus y. So we will write here 14 minus y and then minus y is equal to 4. This will be written on the place of x. Generally this value is placed, and this is what? Equation third we can say. Okay, if you want, then it can be equation third. Either if you want to leave it, then you can. So this will be what? 14 minus this y and this y, these both will be added. Why? Because they having the same signs with same variables and they will be added. So we have to write here 2y is equal to 4. Okay, or we can write this 14 is gone on that side. देखो क्या होता है ना कि भाई भाई को एक साथ रखते हैं. भाई भाई कौन है? ये है, ये है. ठीक है, भाई भाई मतलब कि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म को एक साथ लेके आना. तो और वी विल राइट 2 minus 2y is equal to 4 minus 14, और वी कैन राइट minus 2y is equal to 4 में से 14 गया तो दैट विल बी minus 10. ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कट जाता, और वी कैन राइट कि, और वी कैन राइट y 2y is equal to 10. ठीक है, तो और क्या हो जाता? y की वैल्यू निकालनी है, तो y is equal to 10 by क्या हो जाता? 2, that means 5. y is being what? Equal to 5. देखो y की वैल्यू आ गई, तो इसको कहाँ रखना होता है? थर्ड में रखना होता है. ठीक है, x या y की वैल्यू आएगी तो उसको थर्ड में रखेंगे. ठीक है, तो इस थर्ड वाले में रखेंगे. क्या लिखेंगे?
putting the value of y, the value of y in इक्वेशन थर्ड, ठीक है, मतलब इक्वेशन थर्ड में हम लोग y की वैल्यू को पुट करना, देन वी विल हैव टू राइट और x इज इक्वल टू 14 minus 5, okay, or we will write x will be equal to of 9, because whenever 5 is subtracted from 14 we will have to write what 9. So you understand that whatever I am doing is that we have taken the value of x from one of the equation, no, and that is 14 minus y. This is just substituted in equation second, like on the place of x what is written here 14 minus y, and minus y will be equal to a 4, okay. Then we have to solve this equation and we will get y is equal to 5. Then we have the value of y and that is 5. Then put this value of y in equation third. You will get the result of x as well. Okay. So this is how you can solve the very first question. And now we will see the second question. Okay. How this question is going to be solved. Let us see that. Let us see the second question. How is it going to be solved? We have to see it. Okay. So second question is that what s minus t is equal to 3 and s by 3 minus t by 2 is equal to 6. This is gonna be equation first and this is equation not this is right now. Okay, इसको थोड़ा सा expand करते हैं और it can be written what 3 और 2 का जो LCM हो जाता है वो तो 6 हो जाता है. इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी 2s माइनस इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दिस विल बी 3t will be equal to of 6, or we can write here it is as what 2s minus 3t is equal to, ये देखो 6 इधर साइड जाता है 6 6 36 हो गया. ये हमारा लिए अब इक्वेशन सेकंड हो रहा है. ठीक है, ऐसे इसको रखते हैं. इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया मैंने ताकि फ्रैक्शन से जो है ये हटे. ठीक है, so we will write the second equation as 2s minus 3t is equal to 36. Now see what is going to be happened. Okay, so the very first equation is s minus t is equal to 3. Then we can write here from equation first. From equation first you can observe we will have to write what s minus t is equal to what 3, or we can write the value of s is equal to 3 and plus t. Okay, and this will be equation third. Okay, now the value of this s will be placed in the second equation. Why? Because it is being taken out from first equation so that it will be placed in second equation. Okay, you getting that? So we will have to write now what putting the value of x, putting the value of s, the value of what s in which equation? In equation फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में जो हमको किसका वैल्यू रखना है, एस की वैल्यू को रख देना है. ठीक है, सो दैट नो इक्वेशन सेकंड. वाई? बिकॉज ये तो फर्स्ट से लिया जा रहा है ना, तो सेकंड में रखेंगे. तो हियर द वैल्यू ऑफ एस विल बी प्लेस्ड, और वी कैन राइट व्हाट 2 into on the place of s we will have to write 3 plus t. So we will write here what 3 plus t and minus 3t is equal to what 36, or we can write it as, now just solve this equation. It is being linear equation in one variable, you can solve it easily. So you can write here 2 3 are 6 plus 2 multiplied t will be 2t and minus 3t will be equal to 36. अब देखो फिर से भाई भाई कौन हो रहा है, ये दोनों भाई भाई है ना, विद सेम वेरिएबल टर्म्स एंड ये कांस्टेंट टर्म्स हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग एक साथ करते हैं भाई भाई को, यानी कि 36 को और 6 को एक साथ करेंगे. देन वी विल राइट व्हाट 2t में से 3t को पहले मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, देन दैट विल बी माइनस t एंड 36, और ये वाला इधर साइड जाएगा माइनस 6, और माइनस t विल बी इक्वल टू ऑफ व्हाट 30, और देन t विल बी इक्वल टू ऑफ व्हाट माइनस 30. ठीक है, क्योंकि इधर साइड का माइनस जो उधर साइड जाएगा है ना डिवाइड में, तो 30 बाई माइनस 1 एंड दैट विल बी माइनस 30. पहले तो ये t का वैल्यू आ गया. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s एज वेल. सो वी कैन राइट हियर putting the value of t in equation थर्ड, है ना. अब तो वैल्यू मिल गया तो इसको थर्ड में रख देंगे. देन वी विल हैव टू राइट व्हाट s विल बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस 30. ठीक है, अब देखो माइनस 30 प्लस 3 दिस विल बी माइनस 27. देन वी कैन राइट हियर s इज इक्वल टू माइनस 27. This is the other answer. That means the value of t is what minus 30 and the value of s is equal to what minus 27. You can just test it as well.
whenever you write the value of s as minus 27, then this will be minus 27, and on the place of minus, minus will be there. On the place of t we will have to write minus 30. That means minus minus plus, that this is going to be what, plus 30, and this is going to be minus 27. Then minus 27 is added with plus 30, the result will be 3. So our answer is correct. Okay, so this is how you can solve the very second question of question number 1. okay, now let us see question number 3. इसको देख रहे हो तो तुमको यही समझ में आ रहा है. अभी थर्ड वाले को देखो, आराम से इजीली समझाता हूँ. क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ये 3 है और 9 है, तो 3 3 जा 9, और मतलब 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3 आ जाएगा, ये भी 1/3. मतलब कि इसके ढेर सारे सॉल्यूशंस होने चाहिए. क्यों? क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जा रहा है, तो इसके ढेर सारे सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, तो इसको आपको ऐसा ही लिख के छोड़ देना है कि दिस इक्वेशन हैविंग सो मच सॉल्यूशंस. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, तो यहाँ फॉर इक्वेशन थर्ड के लिए अगर हम देखें थर्ड का आंसर, तो यहाँ पे क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3 है, and then b1/b2 is equal to what, -1/-3, then minus minus goes, and then this will be 1/3, and then what is that, c1/c2 will be written as 3/9, so that it will be 1/3. You get here that a1 by we have what, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. No, so this equation having infinitely many solutions, ठीक है, many solutions. इतना देख देना है कि इसके बहुत सारे solutions हैं. ठीक है, we don't have to solve this question. That is question number 3. Now see question number 4. So now this is gonna be the question number 4. Okay, बहुत ही easy questions है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है. Fourth answer. Okay, so this is saying what, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. ठीक है, तो इसको एक इक्वेशन बनाते हैं. तो इससे सारे डेसिमल्स को हटा देते हैं पहले. ठीक है, तुम हटा सकते हो. ओके, सो डेसिमल्स को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, और दिस विल बी 0.2x है, तो इसको क्या लिखते हैं, 2x/10. ठीक है, एंड देन वी विल राइट व्हाट, 3y/10 इज इक्वल टू 13/10 हो जाता है डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो. और वी विल राइट इट एज, देखो इन दोनों में से हम लोग 1/10 को कॉमन कर लेते हैं, एंड दिस विल बी व्हाट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10. तो 10 से 10 तो कट जाता है, और वी विल हैव टू राइट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. कुछ सारा है समझ में. यहाँ पे 0.2 था तो इसको हम लोग 2/10 लिख सकते थे, 0.3 था तो 3/10 लिख सकते थे, और 13 था तो 13/10 लिख सकते थे. ओके, एंड देन इन दोनों में से अगर हम 1/10 को कॉमन कर लें, व्हाट इज रिमेनिंग, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. से फिर 10 से ये वाला 10 कट जाता, क्रॉस हो जाता, तो 2x plus 3y is equal to सिर्फ remaining रहा 13. Okay, getting it? It is too simple. So this gonna be now equation first, and now for equation second we can write here again what, 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. No, तो like as this, यहाँ पे 0.4 है तो 4/10 लिख सकते थे, 5/10 लिख सकते थे, 23/10 लिख सकते थे, और दिस कैन बी रिटन एज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, जैसा कि ये इक्वेशन है. ओके, एंड दिस विल बी इक्वेशन सेकंड. नाउ एकदम इजी सा स्टेप है, इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया. इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. ओके, सो नाउ सी कि यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, ये सेकंड इक्वेशन मिल गया. तो फर्स्ट इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. देन वी विल राइट व्हाट, कि 2x और व्हाट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट, 13. वी विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और वी कैन राइट व्हाट, 2x is equal to 13 minus 3y, then it will be x will be equal to 13 minus 3y by 2. This gonna be equation third. x की वैल्यू मिल गई. ठीक है, क्या था, 2x plus 3y is equal to 13, then we will write 2x is equal to, ये उधर साइड जाता 3y, then it will be in a minus, so we will have to write it as 13 minus 3y. तो और x will be equal to 13 minus 3y by 2. अब देखो ये जो x की वैल्यू है इसको हम लोग 1 से फाइंड आउट किए हैं, तो सेकंड में रख देंगे. क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में जो वैल्यू आप रखोगे देन दिस विल बी व्हाट 4 into the value of x is what 13 minus 3y by 2. Then we will have to write here 13 minus 3y by 2 and on the place of 5y it will be written as it is. Okay, 5y is equal to 23. देखो इस 2 से ये 4 2 टाइम्स में कर जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 में 13 से मल्टीप्लाई किया हमने, दिस विल बी 26 माइनस 2 3 जा 6, so it will be write 6y plus 5y is equal to 23. भाई को फिर से एक साथ करना है, कांस्टेंट ये दोनों भाई हैं, then we will have to write what minus 6y plus 5y. पहले this will be what minus y is equal to, this is going to on that side, then minus 23 minus 26 it will be written, so that minus y will be equal to of minus 3 and minus is going by minus, then y is equal to what 3. y की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। अब y की वैल्यू को कहाँ रख देना है, थर्ड वाले में रख देना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन विच थर्ड में रख देते हैं y की वैल्यू, देन दिस विल बी x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3 एंड y के जगह पे क्या है, y के जगह पे 3 आया, देन वी विल हैव टू राइट हियर 3 बाई दिस विल बी व्हाट 2 और वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 by 2 और we can write x is equal to 13 minus 9 will be 4 by 2 or x is equal to, this is going to be divided, no 4 is going to be divided with 2 and with the result will be what 2. So what x is equal to 2 and y is equal to how much, that will be equal to 3. This is our answer and this is how you can solve the question number 4. पहले क्या करो कि जो डेसिमल में दिया गया है तो डेसिमल से इक्वेशन एक अच्छा फॉर्म कर लो ताकि जो है कॉम्प्लेक्स ना हो चीज़ें। ठीक है, तो इससे हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, दूसरा इक्वेशन जगह 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ से हमने फर्स्ट वाले से एक वैल्यू x की निकाली, दैट इज 13 माइनस 3y बाई 2, इसको मैंने क्या कर दिया इक्वेशन सेकंड में प्लेस कर दिया। ठीक है, ये जो इक्वेशन सेकंड है इसमें मैंने प्लेस किया तो मुझे मिला कि x की जो वैल्यू y की जो वैल्यू आई वो 3 आ गई। जैसे ही y की वैल्यू 3, देन इसको थर्ड वाले में इक्वेशन में प्लेस किया और द रिजल्ट विल बी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व the question number 4th of first, okay, from exercise 3. What question number 5? You have to write the answer of question number 5. So what question number 5 is saying, root under 2x plus root under 3y is equal to 0 and root under 3x minus root under 8y is equal to what 0. okay, कुछ नहीं है, बहुत इजी सा, बहुत बच्चे जैसा क्वेश्चन। ओके, तो ये तो इक्वेशन 1 है हमारे लिए और ये क्या है इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो और y की वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, सेकंड वाले में जब पुट करो क्या लिखोगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी विल हैव टू राइट रूट अंडर 2x माइनस रूट अंडर 3y इज इक्वल टू 0 और वी कैन राइट रूट अंडर 2x माइनस इज इक्वल टू व्हाट रूट अंडर 3y, क्योंकि ये माइनस उधर साइड जाता तो प्लस हो जाता, सो दैट इट विल बी इक्वल टू ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर 2y. ठीक है, एक जो है हमको यहाँ वैल्यू मिल गया x की और ये हो गया इक्वेशन थर्ड हमारे लिए। यू गेटिंग इट सिंपली। हम देखो फर्स्ट से निकाले हो तो कहाँ रखोगे, सेकेंड में। सो क्या लिखोगे यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन विच सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड में हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा, इट विल बी रूट अंडर 3 इंटू व्हाट रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर 2y माइनस दिस विल बी रूट अंडर 8 है, तो देखो रूट अंडर 8 जो होता है तो रूट अंडर 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये दोनों का तो पेयर लग गया तो एक बाहर आ जाएगा 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा, रूट अंडर 8 मीन्स 2 रूट अंडर 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ रूट अंडर 8 जो है उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते थे, 2 रूट अंडर 2 मल्टीप्लाइड व्हाट रूट अंडर 3 no 2 root under 2 and the value of y will be y placed. okay, so this is going to be 2 root under 2y, सिर्फ root under 8 की जगह पे मैंने 2 root under 2 प्लेस किया। ओके, गेटिंग इट। अब क्या करेंगे यहाँ, हाँ इज इक्वल टू हो गया 0, देन वी विल हैव टू राइट हियर what this root under 3 is going to be multiplied with root under 3, we will get the result as 3 only. okay, why, because 3 root under 3 will be multiplied by root under 3, this will be what 3 only. okay, you understand that. Now this gonna be 3 and
y will be y and root under 2 will be placed here as it is. Okay, so minus it will be written root under 2y is equal to 0. देखो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, रूट अंडर 2 हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है सारा चीज़, क्लियर है ना. दिमाग को यहाँ पे मेरे साथ रखो. क्या किया है मैंने कि रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3y हो गया, और रूट अंडर 2 को नीचे ऐसे ही रखें. माइनस दिस विल बी व्हाट 2 रूट अंडर 2y, तो इसको 2 रूट अंडर 2y बाई 1 ले लेते हैं, कुछ नहीं है, तो इज इक्वल टू 0. तो रूट अंडर 2 एंड 1 का एलसीएम तो रूट अंडर 2 ही हो गया, तो 3y को ऐसे ही प्लेस करना पड़ेगा. अब देखो 1 में रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो रूट अंडर 2 आएगा, तो ऊपर वाले में रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई करो. जैसे ही रूट अंडर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो वो हो जाएगा 2, और यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया है कि नहीं, समझ में आ रहा है कुछ. यहाँ 1 में रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो रूट अंडर 2 आएगा, मतलब इस वाले में भी रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन के लिए. तो जैसे ही आप रूट अंडर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रियल 2 रूट अंडर 2 मल्टीप्लाइड रूट अंडर 2, तो ये रूट 2 दोनों मिलके सिर्फ 2 बच गया, एंड दैट विल बी 4. 2 मल्टीप्लाइड 2 विल बी इक्वल टू 4. सो वी हेल्प टू राइट हियर 4y इज इक्वल टू 0. और क्या हो गया, तो 3y माइनस 4y इज इक्वल टू, देखो ये रूट अंडर 2 इधर साइड जाता है ना, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो गया. और वी हैव टू राइट दिस विल बी माइनस y. क्या हो जाएगा, सिर्फ 3y में से 4y को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको सिर्फ माइनस y मिलेगा. सो माइनस y विल बी इक्वल टू 0, देन y विल ऑल्सो बी इक्वल टू ऑफ 0. y की वैल्यू मिल गई. अब इसको कहाँ रख देंगे हम लोग, इक्वेशन थर्ड में. सेकंड से निकाल लिया, फर्स्ट से निकाल लिया, सेकंड में रख दिया, ठीक है, एंड देन अब थर्ड में रख देंगे y की जो वैल्यू है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड. तो थर्ड में क्या है देख रहे हैं ना, क्या है, x इज इक्वल टू रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर 2y, देन इट विल बी व्हाट, x is equal to root under 3 by root under 2 multiplied 0. So x will be equal to of 0 as well. Okay, means you understand the value of x is equal to, hence x is equal to 0 and y is equal to 0. यही हमारा जो है सॉल्यूशन है. ओके, यू कैन ऑल्सो टेस्ट इट. यहाँ पे लिख दो 0 और यहाँ पे भी 0, तो ये वाला पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इज इक्वल टू 0. तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, what this question is asking, see, we have to write its answer. So this is what 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2. Okay, and the other thing is what, x by 3 minus y by 2 is equal plus y by 2 is equal to 13 by 6. This is equation 1, this is equation 2. So from equation 1 we can find out the value of either x or y. Okay, and then we have to put it in the second equation. So from equation 1 you can say, from equation first you can write what, 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2. No, or you can also write here what, minus 5y by 3 is equal to minus 2, and this gone on that side, this will be minus 3x by 2. This section go on that side, and this will be minus 3x by 2. Or we can write it as minus 5y by 3. If we just take the common as minus from these both, we will have to write it as 2 plus 3x by 2, and minus is going by minus, then it will be what, y will be equal to of 3 will be here 3 by 5 and 2 plus 3x by 2. This will be the value of y, and this will be the equation third. Now what have you to do is that put the value of y in equation 2. So what will you write, putting the value of y, putting y in equation second. So in equation second, if you write x by 3 and plus what it is, the value of y is 3 by 5 into 2 plus 3x by 2. So here we will have to write on the place of y, then firstly we have to take the common 1 by 2, and this will be the value of y, and the value of y should be placed now. Then it will be like this, 3 by 5 into 2 plus 3x by 2 it will be. Okay, you understand, the value of y is put it now, this will be equal to a what, 13 by 6.
Okay, then after putting y we get the value as this. No, or we can write it as x by 3 plus 1 by 2 and 3 by 5 will be multiplied, and this will be 3 by 10, and then we can write 2 plus 3x by 2 is equal to 13 by 6. Or we can write this thing, we have to multiply this with completely the whole, then we will have to write x by 3 plus 3 by 10 is multiplied with 2, then the result will be what, 3 2 ja 6 by 10 plus 3 by 10 is multiplied with 3x by 2, then it will be 3 3 ja 9x by 10 2 ja 20 will be equal to 13 by 6. Now the constant and the variable part should be with each other, that's why take this part on that side, or you can write x by 3 plus 9x by 20 will be equal to of what, 13 by 6, and this will go on that side in minus, this will be 6 by 10. Or we can write it as the LCM of 20 and 3 will be, write it as 60, and this will be 20x plus 9 3 ja 27x is equal to, then 6, the LCM of 6 and 10, take it as what, 60, multiply it directly, and 13 is multiplied with 10, 130 minus 36. Then you understand other thing, that and what it is remaining, 20x plus 27x will be 47x, and that will be equal to 130 minus 36, this will be 94. Or it can be written x is equal to 94 by 47, this is gone, and the remaining is what now, 2, or x, the value of x is what here, 2. Now the value of x should be placed in equation third. What equation third is this is, okay. So in equation third we have to put the value of x. Now putting x is equal to 2, putting x is equal to 2 in equation third. After putting the value of x in equation third, you will have to write y is equal to 3 by 5 and 2 plus 3x by 2, means 3 multiplied 2 by 2, then it will be y is equal to 3 by 5 into 2 plus this 2 is gone by 2, then 2 plus 3, means we can write y is equal to 3 by 5 multiplied 5, 5 is gone by 5, then y will be equal to of 3. Okay, so you get here what, the value of y as 3 and the value of x is 2. Okay, so this is how you can solve the question number 6th of first. Okay, we will see question number 2 in our next class, and as well as question number 3 will be solved in the next session. In next video you will get the solution of question number 2 and 3 completely, and this is too much for today. I hope you all have enjoyed a lot it, and in the next lecture you will get the solution of question number 2 and 3. Okay, so thank you for today, see you soon in the next.